Hello friends, so welcome back to another video of class 8 chapter 4 crop production and management, which is found everywhere in my suggestions. So let us start with this first chapter of class 8, and we will be doing all the science chapters and English chapters in this channel only. So subscribe to RJ Education classes for more such videos. So let us start. This is a small conversation between Pahili and Bush in which they are talking about when he went to his uncle's village and there was he saw his uncle is a farmer and he is using a lot of you can say tools like khurpi, sickles, shovel, hoe, and etc. in the field. So let us start. I want to know where and how we use this tool. So in this whole chapter, it is only about these tools and management of crops. So we will read all the programs or progress done in fields by farmers and how harder is it to grow fields. So let us start. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their own food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? तो इस पूरे पैराग्राफ में ये है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी एंड इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड ह्यूमंस एज वेल तो जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं पर जो ह्यूमंस होते हैं एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते तो उनको खाना कैसे मिलता है so let us start in second paragraph. But first of all, why do we have to eat food? हमें खाना जरूरी क्यों होता है हमें खाना क्यों खाना चाहिए You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. So, जैसे कि आप सभी को पता है जो फूड है वो यूटिलाइज किया जाता है हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म से एनर्जी के लिए और बॉडी के फंक्शंस जैसे डाइजेशन यानी खाना पचाना रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग से एक्सरसाइज से और फूड से एनर्जी बनाना एंड एक्सक्रीशन Excretion means digestion of food and throwing out the waste from our body. We get our food from plants or animals or both. तो हमें हमारा खाना plants से, animals से और दोनों से भी मिलता है. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो हमें खाना इतने पहले से मिलता आ रहा है हम आगे के जनरेशन के लिए खाना कैसे लेके आएंगे कंट्री में हमें अपने लिए तो खाना मिल जाता है पर औरों के लिए क्या उनका खाना कहाँ से आता है कैसे आता है फूड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें खाना भी ज्यादा ही उगाना पड़ेगा In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अगर हमें बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो हमें खेती ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ेगी और उसको लगातार उगाना पड़ेगा जिससे खाने की कमी ना हो और उसको मैनेज करके रखना होगा अगर वो सूख गई तो भी खराब है और उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया तो वो तभी भी खराब है और डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी देयर एग्रीकल्चर practice When plants of the same kind are cultivated,
at one place on a large scale is called as crop. So, what do you mean by crop? Crop is a large field in which the same kind of plants are grown in line properly, and this is known as crop. For example, wheat. Wheat is a plant like गेहूं जिसे हम बोलते हैं. You already know that crops are of different kind. तो आप सभी जानते होंगे जो खेती है वो अलग अलग प्रकार की होती है. एंड सच एग्जाम्पल्स आर सीरियल्स, यानी जिसमें हमारी दाल, चने, चावल और गेहूं सभी आ जाते हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. सो these can be classified on the basis of the season in which they grow. और उन सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके सीजन के हिसाब से और अलग अलग कंट्रीज में. और इंडिया एक सबसे बड़ी कंट्री है. द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. According, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. तो इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है. क्लाइमेट और टेम्परेचर क्योंकि उसमें सबसे अच्छा है. एंड वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती है क्रॉप्स को उगाने के लिए अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में. तो उनमें से टू टाइप्स है, खरीफ एंड रबी क्रॉप. एंड खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर shown in the rainy season are called kharif crops. So kharif crops are grown in rainy season in India. Is generally from June to September. और जो रेनी सीजन है वो इंडिया में जून टू सितंबर के बीच में होता है. एंड द क्रॉप्स grown are known named paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops. Rabi crop, the crops grown in the winter season. जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं. और विंटर सीजन इंडिया में कब होता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक. तो वो उगाई जाती हैं. एंड और वो क्रॉप्स राबी क्रॉप्स बोली जाती हैं. और राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है वीट यानी गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंस. लिंस मानी दालें. So, besides their pulses and vegetables are grown during summer at many places. और जो सब्जियां हैं और जो दालें वगैरह हैं ये सबसे ज़्यादा गर्मियों में उगाई जाती हैं क्योंकि गर्मियों में सनलाइट इनको प्रॉपर मिलती है. So, why the paddy grown in winter season? जो पैडी है वो ग्रोन विंटर सीजन में क्यों की जाती है? क्योंकि पैडी जो होती है उसे पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और ये रेनी सीजन में ही उगाई जाती है. So cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers on a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. So जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन है उसके साथ साथ और उसके अलावा फार्मर्स और भी बहुत सारे काम करते हैं टाइम टू टाइम जब वो फील्ड में क्रॉप्स उगाते हैं. और यही सेम काम गार्डनर्स भी करते हैं और यही सेम सारी एक्टिविटीज हम अपने घर पे भी करते हैं जब हम कोई पेड़ उगाते हैं. These activities or tasks are referred to as agriculture practice which are listed below. So जो practice farmers करते हैं and this is given here. So first is preparation of soil, means checking the soil is perfect for sowing or not. And then sowing माने preserving seeds or saplings in the soil. And next is adding manure and fertilizers to make soil conserving and
grown able, and manure makes a layer on soil that helps also to the soil also for grabbing it, and fertilizers is a type of powder which is spread in the field and it goes washed easily with water, whereas manure does not. And manure is healthy. It is made healthy with healthy products, whereas fertilizers are made in factories. So next is irrigation. Irrigation means watering the plants. Next is protecting from weeds. That means not growing any another insectical plants between the crops because that can damage the crops as well. Next is harvesting. Harvesting means cutting the crop timely when it doesn't get dry or it is not that green that it will not able to eat. And next is storage. If we will not do the storage of the grains properly, so it will dry in sun and it will soak or it will be soaky in the rain. So next is, so these activities are, you can say that they are explained properly in big paragraphs down, and one of them is 1.3. So let us start with 1.3, that is the preparation of soil. तो सबसे पहले हम खेतों में जो सोयल है उसे प्रिपेयर करते हैं कि हम उसमें क्रॉप्स को अच्छे से उगा सकते हैं या नहीं, या फिर उस सोयल में एबिलिटी नहीं है कि वो उगा सके। एंड आई वांट टू नो यू अ थिंग एज वेल कि एक ही अगर जमीन पर एक ही टाइप की क्रॉप 2 से 3 बार लगातार उगाई जाएगी तो उसी क्रॉप के न्यूट्रिशन ability is also same, and that takes the same type of nutrition, and these nutrition will get replenished from the soil and the plants will not able to grow easily and they will be spoiled. So preparation of soil before growing the crop is very important, and it is a very important task in agriculture, that is loosen the soil because that makes space between the soil for getting water in and for oxygen for getting roots, which helps them to help in preserving the oxygen. And this helps to pretending in the soil. The loosened soil allows the roots to breathe easily even when they are so deep into the soil. तो ये वाला सारा पैराग्राफ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. So why does the loosening of soil allows the roots to breathe easily? Why does the loosening of soil allows the roots to breathe easily? So this is the question कि अगर हम जब जो सोयल है उसको लूजन अप कर देते हैं तो वो कैसे हेल्प करती है रूट्स को इजीली ब्रेथ करने में. तो उसका आंसर भी नीचे वाले पैराग्राफ में ही दिया गया है. The loose soil helps in the growing of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of farmers. तो जो अर्थवर्म होते हैं यानी धरती के अंदर होने वाले कीड़े और माइक्रोब्स होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं और वो सॉइल में मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं. And those insects are known as farmer friends. मतलब friends of farmers, you can say, and the organisms are friends. They fuse further return, loosen the soil and add humus to it. Also वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसके अंदर डालते हैं मतलब मिनरल, उसका नाम है ह्यूमस. So but why the soil needs to be turned and loose? So this is also a question कि जो soil है उसको loosen up क्यों करना पड़ता है? What's the reason for that? So let's check the next paragraph. We will get its answer in reading only. The questions are given and directly we are finding answers as well in between.
So please listen it properly to the video. If you are not getting it, check this video twice, thrice, and you will be cleared because all the words are maintainedly, properly, are passed to your mind and for learning it. And its class, science is not that much important, means it's too easy to complete it. You are knowing all the steps and things, but some are the new terms which you forget easily. You have learned in the previous classes that soil contains mineral, water, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा कि सॉइल होते हैं उसके अंदर अंदर मिनरल्स होते हैं एंड मिनरल्स के साथ साथ उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को और जो एनिमल होते हैं डेड या फिर उनके जो बोन्स साइड से या फिर काउ डंग एज एग्जांपल्स आर डिकम्पोज्ड फॉर प्लांट्स and those make nutrition for plants. These nutrients are again absorbed by plants. और जो वो nutrients होते हैं वो plants से लिए जाते हैं. So next paragraph, since only a few centimeters of top layer support the plant growth. So जो soil की बहुत सारी layers होती हैं और उनमें से एक लेयर होती है वो कुछ ही सेंटीमीटर की होती है and that helps in growth of plants as well. और उसके ऊपर कुछ लेयर मैन्योर की भी लग जाती है साथ साथ. So turning and losing of soil brings nutrition rich soil at top and plants can use these nutrients. तो जो लेयर soil की layers होती हैं उनमें से जब हम पानी डालते हैं जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं and normal soil stays upstairs. So when we loosen the soil, so the nutrients came up which are used by plants again. So this is also an important part in growing the crops. Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crops. So जो losing है soil की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फॉर कल्टिवेटिंग द क्रॉप. तो अभी पढ़ते हैं क्यों होती है इम्पोर्टेंट. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टेलिंग और पोइंग. पोइंग मीन्स it's a tool for which is used to loosen the soil and this process is known as point or tilling. This is done by using a hoe. Hoe are made up of wood and iron. तो जो पो होते हैं वो वुड और आयरन से मिलकर बनते हैं and if the soil is very dry, अगर soil बहुत dry होती है so it may need water before pouring. तो उसको लूजन अप करने से पहले और पोइंट करने से पहले उसको पानी की जरूरत पड़ती है and this is the most important thing which is asked in exams. So the point fields may have big clumps or soil are called clumps. The clumps or clumps is a term जो मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर टाइप के बन जाते हैं जो मिट्टी के ही होते हैं और उन्हें हम अगर जमीन पर डालते हैं तो वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं. That things are known as clumps. और वो clumps भी खुल जाते हैं जब जो आयरन का शार्प पार्ट होता है वो उन clumps पर लगता है. And the clumps are also not good for the soil because they absorb all the water and they become more hard as well as they make difficulties for farmer to growing crops. So it is necessary to break these clumps. So necessary होता है हमारा कि हम clumps को तोड़ें.
Leveling the field is beneficial for sowing as well or for as for irrigation. Irrigation means watering and sowing means growing the seeds or preserving the seeds in soil. So लेवलिंग जो होती है सोइल की वो लेवलर से की जाती है और वो बहुत जरूरी होती है. So sometimes manure is added to the soil before tilling. और कभी कभी तो मैन्योर को सोइल में टिलिंग यानी बोइंग और लेवलिंग इन सभी कामों से पहले ही मैन्योर को डाला जाता है. This has improper mixture of manure with soil. और ये प्रोसेस मैन्योर और सॉइल को अच्छे से मिक्स करता है. एंड दिस सॉइल मेजर मॉइस्चराइज बिफोर सोइंग. और जो मैन्योर होता है सॉइल होती है ये मिक्स हो जाते हैं और मॉइस्चराइज हो जाते हैं सॉइल में सोइंग करने से पहले. Agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to breaking soil clumps to get better yield. So, better yield means better soil or better area to grow crops. It is necessary, and the tool is used, and the tool name is hoe, and cultivator. तो अभी हम इन तीनों के बारे में भी बड़े बड़े पैराग्राफ के थ्रू हम अभी इनको समझेंगे. और अगर इनके बारे में क्वेश्चन आए तो हम इनके बारे में क्वेश्चन आराम से इन पैराग्राफ में से दे सकते हैं. एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली एक्सप्लेन इन दिस पैराग्राफ. Oh, this is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizers to the crops, removing the weeds, and turning the soil. This is made of wood and the drawn for a pair of bulls or other animals like horse and camels. It contains a strong triangle iron strip called portia. This main part of the bow is a long log of wood which is called a bow shaft. That means एक पो एक ऐसा टूल है जो पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है और ये मदद करता है जो मिट्टी होती है उसको लेवल मतलब उसको सेट करने में, उसके अंदर के क्रम्प्स को तोड़ने के लिए और साथ ही साथ उसके अंदर जो वीड्स यानी घास फूस और कचरा से उग जाता है उसके लिए. और इसको खींचा जाता है बुल्स की मदद से या फिर हम घोड़े और कैमल्स भी उसको खींच सकते हैं. इसके आगे एक आयरन की जो वो होती है स्ट्रिप होती है वो होती है जो हेल्प करती है उसको वो सोइल को अच्छे से सेट करने के लिए. एंड there is a handle at one end of the shaft. और जो shaft होता है उसके ऊपर एक हैंडल भी होता है. And as well as the other end is attached to the bull neck as this is. बुल के नेक के ऊपर एक लकड़ी से रखा गया है. In this diagram you can see a farmer is also there and one pair of bull and a man can usually operate the post. और जो मैन है वो इसको ऑपरेट करता है और जो दो बुल है वो इसको ड्रॉन करते हैं आगे की तरफ. और जो आयरन का जो स्ट्रिप होता है वो अंदर चला जाता है और else you can say post here which helps the soil. Irrigation wooden pole is the increasing being replaced by iron pole nowadays. और जो आयरन ये वुडन पो है इसको इन दिनों में आयरन पो में बदला गया है. एंड this is diagram is also given on the next page. So hoe, it is a simple tool which is used for removing weeds and for losing the soil. It has a long rod of wood or iron, a strong board and bend plate of iron is fixed to its end.
So hoe is also a machine, a tool which is having a handle like the duck and having a wooden rod and having a plate type wooden strip in it. और जो हो के आगे जो आयरन स्ट्रिप होती है, this iron strip is used as a blade to pull by animal और ये भी animal से pull किया जाता है, but nowadays it is used by tractor. So next is cultivator. Nowadays hoe is done by tractor driven cultivator. तो जो कल्टीवेटर की मदद से जो पो है उसको आजकल ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है आगे एंड जिसमें जो लेबर्स है वो भी सेव कर दिए हैं और टाइमर टाइमर वो भी बचा दिया, दोनों चीजें इन्हें इसने बचाई हैं। तो sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety and selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. तो sowing है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और फार्मर्स का ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कि वो जो सीड्स है उनको गुड क्वालिटी के और ऐसा सीड्स ले जिससे फार्मर्स के काम में बचत हो और साथ ही साथ जो एक इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसमें एक सीड के ऊपर केवल 3 flowers are only coming and the another one is having 7 to 8 flowers which is taken from a same shrub. So that is known as the yield which is going as to farmers. तो high yield वाले plants बहुत जरूरी होते हैं। Then are these seeds float on water? ये एक एक्टिविटी टाइप है जिसमें एक ग्लास होता है। ये मतलब मैं एक्टिविटी आपको बाद में सारी एक्सप्लेन करूंगी, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। It is shooted by camera and in which hands are also moving. This is also not shown on the laptop or computer. This will be live testing for you people. So next is traditional tools. The tools used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. So एक टूल है जिससे सीड्स को सोइंग किया जाता है और जो वो टूल है वो फनल जैसा होता है जिसके अंदर सीड डाले जाते हैं और वो वुडन पाइप के थ्रू नीचे चले जाते हैं, पाइप के थ्रू पास होकर और वो 2 से 3 सेंटीमीटर और थोड़ी सी दूरी के साथ लगते जाते हैं और पाइप का शेप आगे से कुछ इस टाइप का होता है जिसकी जो सीड है वो थोड़ा आगे आगे करके आराम से प्रॉपर डिस्टेंस में लगते हैं। So next is this is the diagram for that funnel and the stick and the shape is like that only. Next is seed drill. So जो मैंने अभी आपको बताया था सोइंग वाला टूल उसको सीड ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। Seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. तो सीड ड्रिल को आजकल यूज किया जाता है सीड को सोइंग करने के लिए जो ट्रैक्टर के पीछे लगाए जाते हैं। This sows the seed uniformly. मतलब वो सीड को प्रॉपर मैनर में लगाता है, वो इक्वल डिस्टेंस देखता है, इक्वल गहराई देखता है और जो वो ये भी इंश्योर करता है कि जो सीड है वो अच्छे से मिट्टी की परत से ढके हुए हैं और जिससे वो बर्ड से खाए ना जाए और वो प्रोटेक्टेड रहे। तो sowing by using a seed drill saves time and labor. तो ये मशीन भी टाइम और लेबर दोनों बचाती है। So this paragraph done. Let's go to next paragraph. This is conversation between the brother and sister. I have explained this nursery 1 topic to you now only. Appropriate distance between the seed is necessary.
to avoid overcrowding of plants. तो जो डिस्टेंस होता है सीड्स के बीच में वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जगह पर अगर बहुत सारे सीड्स चल जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग होगी and plants will start fighting for nutrition. It's the job, but it happens in really sufficient sunlight, nutrition, and water for the soil from the soil. So this soil nutrition, minerals, and water, and soil and sunlight will be not necessary for those plants. So all time, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. तो कभी कभी अगर एक जगह पर ज्यादा बीज डल जाते हैं तो उसमें से कुछ प्लांट्स को निकाल कर अलग किया जाता है जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर हम उनको नहीं निकालेंगे तो सारे प्लांट्स एक ही जगह पर हो जाएंगे और साथ ही साथ फिर ओवर क्राउडिंग होगी और उनमें से एक भी प्लांट प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। That is the substance which is added to the soil in form of nutrition for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो manure and fertilizers के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो manure होता है that is healthy product which is made in the soil in farmers crop area only, whereas the fertilizers are made in factory with the load of chemicals which is not healthy for our health. So, manure is useful more and it makes a layer on the soil, whereas fertilizer is just a powder which gets blue or you can say washed with water. I saw a healthy crop growing in a farm. It is in the neighbor farm the plants were weak. Why do some plants grow better than others? तो हम इसके बारे में भी अभी नीचे पढ़ेंगे। Some supplies mineral nutrition to the crop. जो soil है वो minerals और nutrients को crop plants तक पहुंचाती है। These nutrients are essential for the growth of plants. और वो जो nutrients होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। In certain areas, farmers grow crops after crops in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what will happen to the field. So, continuously cultivation of crops makes the soil poor in nutrition. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrition. तो जो फार्मर्स है उनको सारे जो सॉइल मतलब मिट्टी होती है उसको दोबारा से कल्टीवेट और उसके अंदर सारे वो प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, दोबारा से मैन्योर वगैरह ऐड करना, जिससे प्लांट्स वीक नहीं रहेंगे। मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो जो मैंने अभी समझाया था वो पैराग्राफ 6 में इधर आ गया है। जो मैन्योर है वो एक ओरिजिनल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनता है और वेस्ट इज पिट टू ओपन प्लेस। और जो वेस्ट है वो ओपन पिट मतलब एक खुले से इलाके में एक होल करके उसके अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट डाला जाता है और उसको डिकम्पोज के लिए छोड़ा जाता है। दिस कंपोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है एंड the organisms composed matter use organic manure। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो जो खेतियों में यूज किया जाता है that makes the crop good। So thank you for watching the part 1. Part 2 of the same video, same chapter will come on the same channel RJ Education Classes. Subscribe.